Hello, guys. It seems like we are live, और अभी हम लेके आए एक second session for you guys. Last time we did a session, me and Pravleen, around study permits for Canada और कैसे करने हैं, किस टाइप से करने हैं. आज हमने सोचा उसका एक extension होता है post graduate work permit. Our postgraduate work permit is very crucial and essential for a lot of international students. So international student majority जो कनाडा आ रहा है उसकी होप यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर प्रोग्राम दे शुड बी एलिजिबल टू वर्क हियर और नॉट ओनली एलिजिबल टू वर्क उनका अप्रोच है कि वी शुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा. तो जो वो परमानेंट रहना चाहते हैं उन लोगों को ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बहुत असेंशियल है, बहुत हेल्प करता है. कुछ लोगों को लगता है कि दिस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज गोना बी गिवन कि भाई मैं कनाडा का स्टडी परमिट लिया, एडमिशन हो गया, स्टडी परमिट ले लिया, मैं कनाडा पहुंच गया हूँ और आई हैव ऑलरेडी बीन हियर, अब मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है. जैसे भी मुझे तो कनेडियन गवर्नमेंट कहेगी कि बादशाह आ ते ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ right away we are going to give that work permit in your hand and you're going to get it. Yeah. It's not like that. Yes. जरूरी नहीं है Yeah. कि आपको मिले. तो सो प्रबलीन कुछ सवाल लेके आई हैं और आई एम रेडी टू आंसर दोज क्वेश्चंस और लेट्स सी ये मुझे क्या ग्रिल करती हैं अभी और क्या मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन निकलती है. टू Oh, यू you are a प्रबलीन. hub of information. टू यू प्रबलीन, So लेट्स there's सी. no grilling. Yeah. लेट्स So सी. my first question to you is, what is post-graduation work permit? For the basic intro. Yeah. बेसिक तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत लिबरल है. लाइक मेनी अदर गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड दे ऑल वांट international students to come to their country, right? International student brings in not only financial reward for a country but also an opportunity to become a future resident or a workforce, because many of the Yeah. western countries are aging, right? So aging population की वजह से ज्यादा काम करने वाले लोग चाहिए. अब ये सब हम Yes. सुनते हैं कि बहुत काम करने वाले लोग चाहिए और बहुत जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत डिमांड है. कभी कभी हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि किस टाइप के जॉब्स की डिमांड है, राइट? और Hmm. इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी बहुत क्लियर रहना चाहिए अपने आप से कि भाई मुझे पहुंचते ही कोई मैनेजर नहीं बनाने वाला या कोई डायरेक्टर Yeah. नहीं बनाने Correct. वाला. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. तो Yeah. पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वो बड़ा इजी है, नाम में ही उसने बता दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि आपका स्टडी कंप्लीशन के बाद में आपको Hmm. कनाडा में काम करना अलाउ करने का परमिट. सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क Yeah. परमिट सिंपल इज दैट कि यू विल बी अलाउड टू वर्क इन कनाडा आफ्टर After the कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम. studies. यस. Yeah. I get it. That's nice. Okay. So, secondly, I would like to ask, like, how do a student apply for a post-graduation work permit after the studies are completed? So, what is the next process to apply for it? Hmm. अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस एक्चुअली फॉर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. उनको लगता है यार मैं कनाडा पहुंच गया ना, लाइक आई बीन Hmm. हियर, आई स्टडीड, नाउ आई वर्कड अराउंड और मुझको पूरा ज्ञान सिस्टम का आ गया. मैं ऑनलाइन जाऊंगा ऑन Hmm. सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे और आई एम गोना फिल अप दोस फ्यू फॉर्म्स, क्लिक क्लिक Hmm. एंड आई एम गोना सबमिट Hmm. और राइट अवे मुझको जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा. मिल जाएगा. Yeah. लीगल प्रोसेसेस आर नॉट दैट इजी. कई बार मैं Yeah. भी कुछ Okay. देख रहा होता हूँ लीगल प्रोसेस. आई एम श्योर यू आर आल्सो लुकिंग एट सम डॉक्यूमेंटेशन टू डील विद द गवर्नमेंट. एनीथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट इज नॉट इजी. का वो कहीं हो, वो चाहे इंडिया Yes. हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मिडल ईस्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, इंडिया हो या इवन कनाडा. इवन व्हेन आई एम Yeah. लुकिंग एट रिन्यूइंग माय ओन पासपोर्ट, तो मैं वेबसाइट पे गया सिटीजनशिप इमिग्रेशन की, पासपोर्ट कनाडा की वेबसाइट के ऊपर, उस पे जाकर के मैंने देखा कि अच्छा दिस इज द प्रोसेस टू रिन्यू. आई रेड इट Hmm. ट्वाइस थ्राइस कि भाई क्या क्या चाहिए, राइट? ये नहीं है कि Hmm. फर्स्ट टाइम आई एम Correct. गोना डू फ्यू थिंग्स, बट ऑलवेज यू नीड टू लुक इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट्स बीइंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. So this postgraduate work permit, which sounds very easy to apply, it could be for some who are knowledgeable or who are able to understand the documentation easily. It could be tricky for a lot of people. अब एक Yeah. केस आपको बताते हैं, पहले बताने से पहले कैसे अप्लाई करना है. Hmm. A student from a very well known university reached out to me, University of Waterloo. It's closer. Yeah.
और यूनिवर्सिटी Yeah. ऑफ वाटरलू इज नोन फॉर इट्स प्रोग्राम्स, और बड़ी अच्छी हाई एंड यूनिवर्सिटी है. टू गेट इनटू द Correct. यूनिवर्सिटी यू नीड रियली हाई ग्रेड्स, 90% एंड अबव होंगे आपका. मैथमेटिक्स के अंदर या कंप्यूटर्स में आप हाई एंड स्टूडेंट ही जा सकता है. So this student Hmm. got admission in University of Waterloo, completed the program at University of Waterloo. When the time Yeah. came to apply for a postgraduate work permit, जनाब कि भाई अब तो यूडब्ल्यू से पास कर गया, मैं तो इंजीनियर हूँ, बड़ा हाई फाई डिग्री है. सिटीजनशिप इमिग्रेशन वाले तो बेचारे क्लर्क बैठे हुए हैं, वो कहेंगे अरे बाबूजी इतनी हाई फाई डिग्री लेके आए, इनको राइट अवे वी आर गोना गिव द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. उसने फिल किया और सबमिट कर Hmm. दिया. सबमिट कर दिया तो प्रोसेसिंग टाइम के बाद एक लेटर आता है उसको कि सॉरी योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हैज बीन रिफ्यूज्ड. देन ही रीचेस आउट टू Oops. मी कि मैंने अप्लाई किया था, आई डिड इट माई सेल्फ, नाउ आई नीड योर हेल्प. आई सेड व्हाट डिड यू डू? तो कहता ये स्टेप्स थे. और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से वी गॉट अ वेब लिंक कि you can Okay. click on the link and that link will tell you that your degree is genuine or not. You can verify the degree that way. And I'm like, Acha. good job. um, do you think citizenship and immigration will go on that link and say yes your degree is verified? No, they will not. There is a set format, there is a procedure. They say you have completed your degree or diploma, we need a completion certificate or letter from your institution कि हाँ भाई इसका हमने कंप्लीट कर, इसका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, एक वो चाहिए. आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, सो विल नीड योर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स. वी विल नीड द डिप्लोमा और अ डिग्री अवॉर्डेड टू यू. ठीक है, ये सब चीजें होंगी. देन वी विल लुक इनटू इट कि भाई यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. तो उसमें देन यू आल्सो हैव टू पे सर्टेन फीसेस आल्सो. देयर आर टू Okay. कंडीशंस इन कनाडा. You can complete a Hmm. program and not graduate, right? And the requirement for getting a postgraduate work permit is getting the degree awarded or a diploma awarded, right? So Okay. for the postgraduate work permit, Canadian immigration कहता है get me that simple letter from your institution which will state कि भाई Prableen Kaur was a student at Conestoga College. She completed this 3-year diploma program on this date and is a Hmm. bona fide student. एक वो letter registrar के office से आएगा, आपकी final transcripts आएंगी और Hmm. आपकी एक photograph हमको चाहिए होगी और कुछ basic other documents, and then we apply, and that would be the simple process. और Hmm. उसमें भी अगर यू हैव कंसल्टेंट हु इज आइदर ओथ कमिश्नर ऑफ टेकिंग ओथ और एफिडेविट वगैरह, वो असेस कर देगा उसको, अटेस्ट करके लगाएगा, एंड दैट वुड बी वैलिडेटेड. सो दैट वुड बी सिंपलेस्ट प्रोसेस टू अप्लाई. Okay. So this is how it sums up. Okay. So, long process. It's not easy, I guess. जितना सुनने में लगता है कि हाँ post graduation work permit is easy to get, but then it is actually not. And not Okay. guaranteed. So yes, not Yeah. guaranteed. Yes, that's what it comes out to be. Okay. So next question is, how long is a post graduation work permit valid for? What is the duration? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है. और validity of the postgraduate work permit is actually tied to the program undertaken by any student in Canada, right? But उसमें Okay. भी ये कहता है कि minimum duration of the program has to be of 8 months at a Yeah. post secondary level. यानी कि अगर कोई international student let's say Canada में है and is studying a language program, right? ESL Okay. पढ़ रहा है, English as a second language, or French as a second language program पढ़ रहा है, that student is not going to be eligible for a postgraduate work permit. ठीक है. ऐसे कुछ Okay. countries से parents, their target is not only immigration aspect, they actually looking for education. So many come Yeah. from Africa, many from Middle East and even East Asia, China, Vietnam, Hong Kong. In China in particular and Hong Kong, where kids come to Canada to study as early as in grade 9, grade 10, इनमें grade 8 में भी बच्चे आते हैं. तो grade 8 to grade 12 वो स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, right? If that student is Hmm. studying in a high school or a elementary school, that Hmm. particular student is not eligible for a postgraduate work permit till the time that student transfers into a public university. Shouldn't be public, private, or any university or a community college,
When they Okay. complete the program at that stage, then they become eligible for a postgraduate work permit. तो basic, आपने कॉलेज का डिप्लोमा कर रहे हो 8 महीने का, यू विल गेट अ Hmm. 8 मंथ्स वर्क परमिट. ठीक है, यू आर डूइंग अ 3 year diploma, you will get a 3 year work permit. Maximum duration of the work permit issued to anyone in Canada would be of 3 year term. 3 years. आपने चार Okay. साल की बैचलर्स डिग्री भी की है, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट ही दिया जाएगा, और गवर्नमेंट उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई करती है कि दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. और उसमें भी देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि कहाँ पे आपको वर्क परमिट नहीं दिया जा सकता, right? Okay. Or I like postgraduate work permit. There are many students who reach out to us, especially from, let's say, Africa and even from other countries. वो उसमें Hmm. कहते हैं कि भाई, we need full scholarship, right? Hmm. To study in Canada. Yes, there are Hmm. certain programs, there are certain treaties in existence जिसके अंदर you can get scholarships for the full program. और पर उसमें क्या होता है कि अगर आप फुल स्कॉलरशिप लेके आ रहे हो, तो द कंडीशन है, कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्टूडेंट ने फंडिंग रिसीव करी है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड एंड डेवलपमेंट कनाडा से, अगर Hmm. स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अवार्ड प्रोग्राम फंडेड बाय वही डीएफएटीडी, कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया है, कनाडा चाइना स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम किया है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट की फेलोशिप प्रोग्राम किया है, वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिल पाएगा उनको, राइट? दे डोंट बिकम Oh. एलिजिबल. और स्टूडेंट ने अगर ऑब्टेन किया है इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप कनाडा चिली, और द स्टूडेंट कंप्लीटेड अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम or a program of study granted by a non Canadian institution located in Canada, regardless Hmm. of the student's length of stay in Canada, chances हैं postgraduate work permit नहीं मिलेगा. ठीक है, Oh. तो need to do the research a little bit and see the fine line कि भाई जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या ये एलिजिबल Hmm. भी हैं. उसके लिए गवर्नमेंट Hmm. ऑफ कनाडा ने भी टूल दिया हुआ है कि फाइंड दिस थिंग ऑन योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और ट्राई टू find the institution's name on this website, and you'll be able to find कि हाँ भाई ये eligible है for the grant of postgrad work permit. Yeah. Mm-hmm. Okay. So Yeah. everybody has to be very careful. Yeah. Yeah. Right. So next question: how much does a post-graduation work permit cost? इसकी कॉस्ट में तो इतना डिटेल में है नहीं जाने का, कुछ कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की. होता यही है कि वंस यू हैव ग्रेजुएटेड, तो वो एक आपको ओपन वर्क परमिट की फीस देनी पड़ती है, एक आपको पोस्ट अच्छा. ग्रेजुएट वर्क परमिट की फीस देनी पड़ती है. तो वही आप लेके चलो 100, 150, $250 के नीचे गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की फीस है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क Okay. परमिट. हाँ. ठीक. या. That's affordable. Next question. Can a student apply for a job before he or she gets a post graduation work permit? ओके, इसमें क्या है, as long as they have a Hmm. valid study permit or Okay. a co-op work permit, they'll be able to continue their job. Okay, Okay. post graduation work permit is actually a way of changing the condition of your stay in Canada, right? उसकी Yes. condition पहले ये है कि your status should be valid. तो Okay. फॉर एन एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट हमारे पास आया, उसके पास completed a degree again from a university, had a valid job offer, started working after graduation, right? तो उसने Okay. ग्रेजुएशन के बाद में काम मिल गया उसको, then he applied for a Hmm. post graduate work permit. Work permit. आपके ठीक है. पास valid study permit था, you had a Hmm. valid stay in Canada, you applied for a postgraduate work permit, you can Hmm. continue to work during that duration. ठीक है, Okay. कि आपने अप्लाई किया पीजीडब्ल्यूपी और मेरे पास वैलिड सोशल इंश्योरेंस नंबर है, एवरीथिंग इन ऑर्डर, आई कैन कंटिन्यू टू वर्क, ऐसा आप कर सकते हैं. Hmm. अब Hmm. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उसने Hmm. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया, किसी वजह से कोई कागज छूट गया या Hmm. इग्नोरेंस की वजह से, और नॉट अ बेटर टाइम मैनेजमेंट, वट एवर इशू. सो दिस It's पर्टिकुलर a missing कैंडिडेट, document. हाँ कोई मिसिंग Hmm. डॉक्यूमेंट है, उसने अप्लाई किया Hmm. पीजीडब्ल्यूपी, and then he misses out on the basic requirement. उसको अब Hmm. एक रिफ्यूजल आता है.
So he gets a ठीक refusal है. from citizenship immigration, और वो refusal letter में वो कहते हैं कि भाई आपने you applied for the postgraduate work permit, we received your application on this date, we sent you a message that we need another document from you, but you did not provide us the document in time, hence your work permit application has been refused. ठीक है, Okay. उसने वो रिफ्यूजल दिया. उस लेटर के अंदर फिर देन दे विल से योर टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस हैज एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट. लेट्स से कि आज हम Okay. बात कर रहे हैं 10 दिसंबर को, और हमको वो लेटर आज 10 दिसंबर को मिला, राइट? तो उससे पहले Okay. ऊपर लिखा है वर्क परमिट रिफ्यूजल, और नीचे साथ में लिख दिया एज ऑफ आपकी टुडे टेम्पररी 10th of December, तो आपका जो स्टेटस इन कनाडा इज एक्सपायर्ड. वो भी अब क्या होता है? एक्सपायर. ओके. हाँ. अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो स्टेटस एक्सपायर हो गया, दैट पर्सन नाउ कैन नॉट कंटिन्यू टू वर्क. अब जो उसके पास जॉब था वो गया. वो भी यस, तो गया. उसको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा जाकर के, सर मेरे पास जो ये $80,000 $90,000 का जॉब मुझे मिला था, मेरी किसी डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से या किसी गलत फहमी मिस से हो गया. वो मिस हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मेरा रिफ्यूज कर दिया है. रिफ्यूज करते हैं. इवन इफ द एम्प्लॉयर सेज, वैसे कहेगा नहीं एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर फिर भी कहता है या दैट्स ओके, यू अप्लाई फॉर रेस्टोरेशन और यू कंटिन्यू टू वर्क फॉर अस, लीगली दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट शुड नॉट वर्क, शुड स्टॉप वर्किंग राइट अवे, उसी दिन के बाद से अगले दिन, कि भाई मैं अब कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप करते हैं you are actually in breach of the rights given to you by the citizenship immigration Canada. उसमें यही होगा, उनके वेरिफिकेशन में अगर आ गया कि भाई इसको हमने रिफ्यूज किया था पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, इसका स्टे भी है इस कंट्री के अंदर जो है वो खत्म हो गया था, इवन आफ्टर दैट दिस पर्सन कंटिन्यू टू वर्क, इसको डिपोर्ट किया जाए क्योंकि इसने हमारे रूल्स नहीं फॉलो किए, राइट? तो अब उस कैंडिडेट के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पहले तो अपना स्टेटस रिस्टोर करना है. सो इट्स रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस, यानी कि वैलिडेट किया जाए उसको कि यू आर स्टिल जॉब अलाउड टू तो स्टे बाद इन में कैनेडा. ढूंढे. पहले ही जॉब तो अब स्टेटस गई वो. वैलिड कराओ. हाँ, वो 90 डेज के अंदर अंदर ही हैज टू अप्लाई रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस एंड पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट साइमल्टेनियसली. तो उसमें उनकी फीस थोड़ी ओके. बढ़ जाती है. वो रेस्टोरेशन के कुछ अच्छा. पैसे लेंगे, लेके चलो $450-500 की गवर्नमेंट की फीस होती है. देन कोई भी regulated Canadian immigration consultant, they will charge. Charges could be anywhere from $1,500 to $3,000, depending on the case, द केस how या. complex that case could be, and that's how the funds would need to be paid by this particular person. Mhm. ओके. Fine. So, okay. So, next question is like, can a student work anywhere, like in any type of job under the post graduation work permit program? Mostly yes. Mostly yes. They can do any kind of job as long as it's a legal job being paid through the legal channels. Yes. There are certain job categories where an international student is being debarred to work. So even just an international student Canada आता है, तो उसमें लिखा होता है स्टडी परमिट के साथ में एक वर्क परमिट नीचे लिखा होता है, कुछ लाइंस होती हैं कि यू आर अलाउड टू टेक अप जॉब ऑन कैंपस, यू आर अलाउड टू टेक अप जॉब ऑफ कैंपस. Off कुछ campus, टेक्निकल, yeah. हाँ, कुछ टेक्निकल वर्डिंग के अंदर an international student is not allowed to work in strip clubs, ऐसा लिखा होता है, राइट? या कुछ Okay. स्पेसिफिक एरियाज है जिसमें गवर्नमेंट फील्स लाइक देयर कुड बी अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा है कि भाई Correct. ये स्ट्रिप क्लब्स में, और जो एनी सर्विसेज सेक्सुअल इन नेचर, उसके अंदर आप ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे. तो अदर देन दैट is free to work where they want to work. That's nice. Okay. Okay. So, next question is, how do a student qualify for a post graduation work permit? What are the qualifications? वो तो वही बेसिक क्वालिफिकेशन जो हमने पहले डिस्कस किया, वी कैन रिपीट दैट. A degree from. हाँ, कि फॉरेन नेशनल सीकिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कुछ कैटेगरीज फॉलो करे. एक कैटेगरी उसके अंदर यही है कि भाई द स्टूडेंट मस्ट हैव कंटिन्यूअसली स्टडीड फुल टाइम इन कनाडा,
at a post Yeah. secondary institution and graduated from a program of at least 8 months duration. एक ये है 8 months minimum duration. 8 साल का, Okay. 8 महीने का. Hmm. The Hmm. student must still be in possession of a valid study permit upon submission of work permit application, यानी कि status valid हो. अगर उसका Hmm. स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया है तो पहले उसकी एक्सटेंशन कराए, नहीं तो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा. The student Hmm. must have received a written notification from the educational institution indicating Hmm. that he or she is eligible to obtain the degree, diploma or certificate. कि वो इंस्टीट्यूशन कहेगा Okay. कि हाँ भैया इसने यहाँ पे पढ़ाई करी थी, इसने पढ़ाई Hmm. कंप्लीट कर ली है, इसको Hmm. डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट अवार्ड होगा. तो यहाँ पे हम फिर वापस आ रहे हैं उस चीज पे, कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम इज वन थिंग, गेटिंग अवार्डेड फॉर Yeah. डिग्री इज अनदर थिंग. ठीक है, क्योंकि Okay. यहाँ पे Yeah. कनाडा में आप ये कर सकते हो, at a particular percentage you can complete the program, but that completion does not mean you graduated from the program. Graduated from the क्योंकि program. हो Correct. सकता है उस प्रोग्राम की कंप्लीशन की परसेंटेज थे 50%, कुछ इंस्टीट्यूशन में 50% नंबर आते रहे आपके, तो आपने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, दैट यू Complete कर कंप्लीटेड लिया. इट, Hmm. राइट. बट टू रिसीव द डिग्री और द डिप्लोमा मिनिमम परसेंटेज ओवरऑल हैज टू बी 70%. कि 70% पे होगा तो ही आप ग्रेजुएट हो गए, नहीं है तो आप ग्रेजुएट नहीं होगे, And राइट. how does a student reach that percentage? They study, The study. they study, they participate in a lot of things within the classroom itself. यहाँ पे Okay. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, राइट. तो उसके अंदर Hmm. पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट. अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट लास्ट टाइम भी कहा, सोशलाइजेशन इज अ मस्ट, ग्रुप वर्क इज अ मस्ट. Hmm. आपको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए. आप क्लास में बैठे हुए हो और आपने पढ़ के आया और यू फील लाइक यार मुझे सब कुछ आता है, आई नो आता एवरीथिंग, है. और Hmm. मुझे सब कुछ आता है, आई एम द बेस्ट, द नॉलेज लेवल इज वेरी हाई, एंड यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द ग्रुप एक्टिविटीज और असाइनमेंट्स, तो वो हेल्प नहीं करता है आपको 70% अचीव करने के लिए. और एक Okay. चीज है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड इज प्लेजरिज्म के ऊपर. एशिया अफ्रीका से बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता. हाँ, हम अंग्रेजी में पढ़े हैं, या वी हैव गॉन टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो ठीक है, हम Yeah. इंग्लिश बोल लेते हैं, वो भी ठीक है. You must have come across many students where they speak perfect English, but when it comes to writing, reading, Writing, uh, yes. Spelling, yeah. right, They or make mistakes, yes. mistakes, synthesizing, उनको नहीं पता, comprehension नहीं पता, तो वो Correct. एमएलए स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, एक एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, जब तक उसको नहीं सीखेगा वो नहीं होगा. काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट आके ऑनलाइन से चोरी करते हैं सामान, कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट सबमिट करेगा. यहाँ पे इंस्ट्रक्टर एक दो बार तो लीनियंट है, उसके बाद वो Okay. कहेगा अब तेरे को जीरो अवार्ड करेंगे, हम तुम्हें प्लेजरिज्म के अंदर जीरो देंगे, और जब जहां जीरो आ गया आप गए, आपको रिपीट करना पड़ेगा. The other condition for the postgraduate work permit जो होता है कि the student must apply for the permit within 90 days of receiving the written confirmation from the institution From the institution. indicating that the academic Okay. program was successfully completed. Example होगा उसमें जैसे final marks है, or formal written notification of the program completion is received. That's what's needed to apply. Okay. 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 Yeah. So these are some points to keep in हाँ mind. हाँ, Okay. बिल्कुल So बिल्कुल. next question, like, can a yeah. So next is like, can a student apply for a post graduation work permit before he or she gets the diploma or a degree? हाँ, वो तो है ही है. They can अप्लाई कर certainly. सकते हैं क्या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट? ओके. हाँ हाँ, अप्लाई कर सकते हैं. वही तो चाहिए ना, अभी हम वही बात करें कि एक रिसीविंग उसको रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाए इंस्टीट्यूशन से कि भाई इसका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया एंड दिस पर्सन विल बी अवार्डेड अ डिग्री, डिप्लोमा वगैरह, तो दे कैन अप्लाई. हाँ, सो इट मींस दे उसको जस्ट कोई नीड इशू अ नहीं. सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन दैट आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है. नाउ यू कैन मेक द नेक्स्ट स्टेप, बट देन ऑब्वियसली द सर्टिफिकेट के, वर्क विल हाँ स्टार्ट आफ्टर. हाँ हाँ, सर्टिफिकेट के या. साथ में दे विल नीड देयर मार्कशीट, राइट. फाइनल मार्कशीट चाहिए होगी रजिस्ट्रार ऑफिस से, और एंड देन दे विल बी ठीक है. एलिजिबल टू वर्क. यस, उसमें अप्लाई. कोई इशू ही नहीं ओके. है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. या And what if a student is waiting to receive the post graduation work permit, and can the student work during that?
Again, on this point, as long as they have a valid status in Canada, they can continue to Okay. work. The moment Will a it be like favorable 20 hours wala no system या फिर नहीं they नहीं can work? अभी अभी तो Okay. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत ज्यादा लिबरल हो गई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एंड द स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि अरे वाह हमें तो बहुत बेनिफिट है लॉन्ग हाँ. टर्म में उसके हाँ. रिजल्ट्स पता चलेंगे कितना अच्छा है कितना खराब है Yes. क्योंकि द Hmm. फोकस इज चेंजिंग ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो उनका फोकस अभी हो गया अनलिमिटेड वर्क अलाउड है नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक हम तो खूब काम करेंगे कर लो भाई काम जब तुम जब तुम फेल हो जाओगे अपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा या क्लासेस में फेल होते ही क्या होने वाला है हम्म. आपके साथ में जो आपको वर्क अलाउ किया है वो भी विड्रॉ होगा वो सब. गवर्नमेंट Hmm. कहेगी कि भाई ओ या वी गेव यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क दैट डज नॉट मीन कि तुम फुल टाइम काम करो और पढ़ाई पे ध्यान मत दो व्हाट वाज योर रियल इंटेंशन टू कम टू कनाडा the real intention Correct. was to come and study here rather than To study, working, yes. right? अब आपने स्टडी साइट पे कर दी हमने अलाउ किया अनलिमिटेड वर्क टिल दिसंबर टू 2023 नाउ यू स्टार्टेड वर्किंग 70 80 आवर्स आपका करने लगे काम वीकली जैसे भी कई लोग करते हैं कहते हैं या. क्लासेस मिस कर रहे हैं मैक्सिमम आवर्स पे जाके वो जब काम करेंगे फेल हो जाएंगे ना Hmm. जब वो फेल Hmm. होंगे देन द गवर्नमेंट विल बी सेइंग कि आपका ऑफ कैंपस वर्क करने का राइट हैज बीन withdrawn because it's written on the study Withdrawn. permit you are allowed to work x number of hours या you are allowed to work off campus अभी के लिए as long as you maintain this तो वो जो सेक्शन सबसेक्शन पढ़ेंगे withdrawn अब उसको क्या करेगा फिर बच्चा वो ऑन कैंपस भी काम नहीं कर पाएगा ऑफ कैंपस भी काम नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने प्रोग्राम में वापस जाके पास नहीं होता राइट पास नहीं होता. हाँ तो if you don't graduate you don't complete your Hmm. program that means Hmm. the postgraduate work permit will not be awarded to you right So there has to be a balance. Students, there has to work be bhi bit utna balance and you should study also just to continue yourself in the Canada. exactly That's nice. Yeah. yeah Okay. So next question is if a student says that I'm waiting for my post graduation work permit, can the student travel outside Canada and come back with the student visa itself? अच्छा अब यहाँ पे हमें we need to understand the difference between a postgraduate work permit a study Hmm. permit and a Hmm. travel authorization ठीक है Yeah. if a student is coming from let's say Pakistan, Nepal, Hmm. Bangladesh, India, China या कुछ भी country जहाँ से visa की requirement है that they need a Hmm. visa. So let's say student Hmm. is from Nepal applied for a study permit. वो जब पहले apply करते हैं there are two documents that have been given. पासपोर्ट के Hmm. अंदर एक काउंटर फॉइल स्टिकर लगाया जाता है ठीक है जब ठीक वीजा है. ग्रांट होता है उस पे लिखा होगा विजिटर है या स्टडी परमिट है या Student है. वर्क Yeah. परमिट है जो भी है लिखा है और उसकी Hmm. एक ड्यूरेशन दी हुई है वैलिड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट The state. ठीक है Yeah. Correct. अब वो आ गया यहाँ पे यहाँ आने के बाद पे एयरपोर्ट पे उसको सीबीएसए ऑफिसर पूछेगा हाँ जी कहाँ से आए हो तो मैं काठमांडू से आया हूँ मैं आई एम हियर Hmm. टू स्टडी दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तो ठीक है लेटर लाए हो जो पढ़ने आए हो हाँ लाए हैं वो देखेगा देखने के बाद कहेगा ठीक है फाइन तो उसको वो सेकंड ऑफिसर के पास भेजा जाता है वो सेकंड ठीक ऑफिसर है. का काम क्या है वो फिर से उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसको एक स्टडी परमिट इशू करेगा दैट इज अनदर सेपरेट लेटर ठीक है Okay. उस ठीक स्टडी है. परमिट लेटर पे लिखा होता है कि भाई आपको इस ड्यूरेशन में यहाँ पढ़ने जा रहे हो इस ड्यूरेशन का Hmm. ये स्टडी परमिट आपका दिया हुआ है नाउ यू आर परमिटेड टू Hmm. स्टडी इफ देर इज अ कोऑप इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम तो उसको वहां पे वो एयरपोर्ट पे कोऑप वर्क परमिट भी इशू करेगा कि हाँ यू आर अलाउड टू वर्क ऑल्सो तो अलग अलग कंडीशंस में चीजें देते हैं वो लोग अब वो जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं they are Hmm. they can be used in Canada, right? वो कनाडा में वैलिड स्टेटस है for an employer to look at कि हाँ भाई for a education institution to look at कि has a valid study permit to study, has a work permit to work. But that Hmm. particular piece of paper is not a travel document. It does not give you an authorization to travel. तो Travel. जो ठीक क्वेश्चन है. आपका इन पर्टिकुलर था कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के पास मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता राइट दैट वाज द क्वेश्चन हुँ, हुँ, कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, आपके हाँ, पास मैं आया अप्लाई नहीं है किया, अभी तक। आया नहीं, ठीक हाँ, है। येस यू कैन हुँ, ट्रैवल, यू नीड टू चेक योर पासपोर्ट फर्स्ट। अपने पासपोर्ट में ठीक है। ओपन
उसको चेक करके देखो, जो मुझे इनिशियल वीजा टू, दैट इज कॉल्ड द टेम्पररी रेजिडेंट वीजा टू कनाडा, टीआरवी, Visa. जो इशू किया हुआ है आपको, Yes. उसकी Hmm. वैलिडिटी क्या है? इज इट वैलिड एट ठीक द टाइम ऑफ ट्रैवल, कि जब मैं ट्रैवल है। करना चाहूंगा तब, और द टाइम व्हेन आई वांट टू कम बैक टू कनाडा, इज इट वैलिड? इफ इट्स वैलिड, yes, you can travel, right? If ठीक that है। is not valid, then you should Hmm. not travel unless and until you are ready कि मैं अपने होम कंट्री जा करके वहां बैठूंगा और वहां से I'm gonna reapply for a this TRV visa. In certain Hmm. countries, it can take very long to get a TRV, and I have a very good example of a case like that. This Hmm. was a student from Nigeria, um, Okay. studying already in Canada at a high school level, and the student decided to travel, let's say for Christmas break. उसका study Hmm. permit was valid, but he decided to Hmm. travel to a third country, not his home country. ठीक है? Okay. उसको था कि Somewhere else. मैं Hmm. वेकेशन में बारबाडोस या बर्मुडा या कहीं ऐसी कंट्री में ट्रैवल करूंगा घूम फिर के, then I'm gonna come back to Canada. ठीक है। जनाब ने टिकट बुक करी, booked up the flight and went to this country, had his wonderful vacation. At the time of returning back to Canada, उसकी टिकट बुक थी। उसने कहा अब तो Hmm. मुझे वापस कनाडा जाना है। He goes to the airport of that country जहाँ भी वो Hmm. वेकेशन मनाने आया था, और चेक इन Hmm. करने लगता, तो उसको कहा नो यू कैन नॉट चेक इन, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। कहता क्यों भाई, आई हैव अ वैलिड स्टडी परमिट। कहता यू नीड टू Yeah. सी द ऑफिसर एट द एयरपोर्ट, और एयरलाइंस के साथ बात करें। देन ही गोज टू द एयरलाइन, they look at his passport, they say yeah, that's fine, this is a study permit, that is fine, but you need to see that the the initial temporary resident visa given to you has already been expired, Expired. right? Correct. So now you cannot fly back to Canada just on the basis of that piece of paper given at the airport, which is a valid study permit. Okay, this allowed you to work in or study in Canada, but does not allow you to travel back. What happened with this kid? He had to go back to his home country, and going back to his home country Nigeria was painful for this particular student, because uska jo flight thi pehle, that was Hmm. through some other place. Now because he does not have a valid Canadian visa, many airports were like you cannot even do a transit through us, तो उसको फ्लाइट ढूंढनी पड़ी ऐसी किसी कंट्री की जो उसके पासपोर्ट को ऑनर करके allowed them to do a transit through their airport to his home country. So वो जो 15 दिन का वेकेशन बना के आया था, that particular student, costed It him, costed heavily. yeah, because he had to go from 2 3 different countries to reach his hometown, stay there for 4 months, and then got his TRV and got back. So always look at your passport, the dates, the documents, otherwise it could be Yes. difficult. Yeah. So what we Okay. recommend normally, Prableen, कि जब भी someone comes to us, anyone for a Hmm. visitor visa or a study permit or any kind, our recommendation always is when we'll apply, we apply Hmm. for a multiple entry visa to Canada, right? तो Yeah. ये कि Yeah. visa की condition है single entry, you're in, Single entry. Yes. Correct. done, Hmm. right? Hmm. So Hmm. 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 multiple Hmm. entry is always good to have, but again, it will have a validity date. Yeah. Yes, correct, Mhm. correct. Okay. So, next question is, how can a student show a potential employer that he or she is allowed to work while I wait for my post graduation work permit? That is not very difficult for any international student to prove. Okay. First, they will ask, okay, do you have a valid study permit? Yes, has a valid study permit. Um, and that's about it. They have a social insurance number, which is Hmm. valid for that duration, or an employer will make ask that have you completed the program? Yes, I've completed the program, and now I'm applying for a PGWP. That would be more than enough for the student to be able to work. So, not that difficult. That's Not okay. that difficult. Yeah. Okay. I get it. So, very simple question. How many times can a student apply for PGWP? हाँ, ये बहुत interesting question है. This is something which a lot of people need to understand, because they think that कि भाई मैं 2 साल के प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता हूँ. People think Hmm. around, right?
and I'll go to Canada. I'll take 2 year study permit. I'll get a 3 year work permit, 3 year work right? permit. Yeah, What 3 year correct, work permit correct. ke beech mein, if I'm able to secure my permanent residence, that would be great. If somehow I'm not able Hmm. to secure my um, permanent residence, I'll reapply for a study permit. कि फिर से पढ़ने आ जाएंगे 3 साल बाद, 2 साल पढ़ाई की खर्चा कर लिया, 3 साल Hmm. पैसे कमा लिए, उसके बाद नहीं होगा फिर फिर पढ़ दोबारा लेंगे, से, हाँ। और उसको करने के या बाद में हम फिर से एलिजिबल हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में लोग बैठे हुए हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे होंगे शायद, थोड़ा कोई पॉलिसी, कोई प्रोसीजर, दे हैव समथिंग इन देयर माइंड कि भाई हाउ टू टैकल ऑल द सिचुएशन, बिकॉज दे थिंक थ्रू, राइट? चोर के चोरी यस। करने से पहले जो जेलर है वो भी तैयारी करके बैठता है कि भाई ये कैसे कैसे चोरी करेगा, राइट? सेम वे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम है टू थिंक अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स कि वेयर दिस पर्सन विल डू फिशी स्टफ। तो सिंपल आंसर यही है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कैन बी इशूड ओनली वंस। आप आए वंस। हो, आपको एक बार मिल गया, उसके बाद दूसरी बार नहीं मिलने वाला, कि नहीं मिलेगा। दैट्स द तो फिर सिंपलेस्ट क्या रीजन। करे? Just to stay in Canada, what should a student do just to continue? हाँ, तो अब वो तो स्टूडेंट नहीं रहा पहले तो। वो तो अब वर्क Hmm. परमिट होल्डर होके वर्क एक्सपीरियंस ले लिया। इफ द वर्क हैज़ Hmm. बीन, लेट्स से इन अ फील्ड जिसमें देयर इज़ हाई डिमांड फॉर पीपल टू स्टे इन कनाडा, Hmm. देन दैट पर्सन विल बी एबल टू स्टे, अदरवाइज़ Hmm. माइट फेस सम डिफिकल्टीज एज़ वेल। Some अब difficulties. Okay. उसके लिए क्या है, वंस द पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर्स, राइट? कि उसकी Hmm. क्वेश्चन है ना आपका कि क्या कर सकता है। तो वंस द Hmm. पीजीडब्ल्यूपी एक्सपायर्स, द स्टूडेंट मस्ट अप्लाई फॉर एन एलएमईए, labor market assessment, and a work Hmm. permit or other applicable program to maintain valid temporary resident status as a worker in Canada। वो एक ऑप्शन है कि आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाएं और वो फिर आपको जॉब ऑफर करता है, उसके बाद वो Hmm. लेबर मार्केट असेसमेंट करवाएंगे, और इफ Hmm. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सेज कि हाँ भाई ठीक है, दिस एम्प्लॉयर इज फाइन, द skill set this particular person brings to the table are needed in Canada, they Hmm. might extend them a Hmm. LMIA based work permit. That's the only option Okay. for So this if your person. occupation is in demand, then you can continue. Yeah, or so there LMIAs could be of many different ways also, जिसके अंदर कोई high end occupation भी हो सकता है, कोई low wage Hmm. occupation भी हो सकता है, जिसके अंदर Correct. local people are not interested to take that job, right? और उसकी Hmm. Hmm. salary इतनी low है कि लोग कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। तो depends नहीं कि चाहिए। what kind of program or an employment this person can actually find. Yeah. All right. So my last question to you: how does a PGWP can help a student to immigrate to Canada? Okay. Um, इसमें intention of government of Canada is, as we said earlier, कि भाई we want people to come here, we want people, Hmm. students to get education in Canada. Hmm. In a way they are learning about the Canadian society, the Canadian work culture. As long as they're Hmm. open minded and learn about it, they'll be given this Hmm. postgraduate work permit to come over here and stay, right? um, Yeah. तो ये बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट दे ही रही है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। एंड व्हाट वाज योर स्पेसिफिक क्वेश्चन? Like how? Let me हाँ, just read my अच्छा, उसको question उसको again. परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। Permanent हाँ, residency to immigrate to Canada. How it is going to help a student? हम्म, PGWP हाँ, कैसे help करता है? हाँ, पीजीडब्ल्यूपी बेसिक वही है कि दे आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे हियर एंड वर्क एंड गेन वर्क एक्सपीरियंस। Up to qualify for permanent residence, the requirements are a little bit different than that of a study permit. बहुत सारे Hmm. बच्चे कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए आते हैं। दे लाइक आई नो सम पीपल, दे हैव हैड गुड डिग्रीज बैक होम, देन दे Hmm. चूज अ प्रोग्राम कि भाई दिस इज गोना बी द इजीएस्ट प्रोग्राम फॉर मी टू कंप्लीट इन कनाडा, और मैं उस प्रोग्राम को लेके आ जाता हूँ। तो एनीवन हु इज कमिंग फॉर ड्राई प्रोग्राम्स, व्हेन आई से ड्राई प्रोग्राम्स मींस जिसमें कोई टेक्निकल स्किल सेट इम्पार्ट नहीं किया जाएगा, कोई हाईली स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं दी जाएगी, they can Hmm. find it difficult to actually qualify for permanent residence. Let's say you did a diploma in business. Yeah. You need a lot of hard work to become eligible for what you call a PR qualification. So a lot of students, when they come, they all want to go to Ontario. They all want to go to British Columbia. Yes. These are the two provinces where
people Yeah. really want to come to, because Yes. they're not wrong. There are a lot of opportunities in these two provinces, but uske alawa bhi Canada is a huge country. There are many other provinces. Yeah. Some provinces are more open to people Hmm. for immigration perspective, because there's already a lot of people in BC, British Columbia, and Ontario. It becomes difficult for these diploma holders to actually get permanent residence here unless and until they are going in a program which is technical in nature. When I say technical in nature, you are taking a program, let's say electrical electronic engineering, mechatronics, mechanical engineering, anything to do with sciences, anything to Sciences, do yes. with yeah, sciences in particular, they'll be eligible. Telecommunication के अंदर आना चाहते हो आप electrical है, electronics है, GMO modification, anything to do with that, you'll be in highly skilled program. You are taking programs in arts, and then it can become a little bit tricky. If you're taking Hmm. program in business at a diploma or certificate level and you have no degree prior to that program, it becomes difficult to secure permanent residency here even after PGWP. तो उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हमारा रिकमेंडेशन होता है, don't target Ontario or British Columbia. Look at other provinces, look at smaller provinces where there are more options available. If they look at those options, then the chances are they'll secure their future better. बहुत सारे students when they're here in Ontario, um, after completion of the program and after even 1 2 years of work in Ontario and British Columbia, then they figure out कि my time is cutting short for my permanent residency application. I will not be able to secure PR here. तब वो बेचारे भागते हैं, वो फिर then they run to Manitoba, Saskatchewan, or some other Yeah. provinces. Yes, correct. And those provinces are also now becoming well educated because of this incursion of a lot of students now कि भाई पढ़ाई Hmm. करके आए ऑन्टेरियो बीसी में, अब नौकरी और पीआर के लिए आप हमारी प्रोविंस में आ रहे हैं. आप हमारे दे पास आर आ रहे चेंजिंग हो. दे आर चेंजिंग कंडीशन. तो वो भी क्या कह रहे हैं कि भाई if there is someone in Manitoba, that student has went to an institution in Manitoba, then the government will be like, you get more benefit because you Hmm. came to a province to study, you completed a program at a public institution or a DLI, designated learning institution at that province. तो हम इनको priority Hmm. देंगे ना, rather than Hmm. giving priority to someone who spent money in the other province, got education Hmm. from some other, and then came. So there are certain things we need to look at. और Hmm. आपका रोल इसके अंदर भी बहुत मेजर है. आई नो sometimes students don't want to hear out few things, but as someone who is here to give counseling to the students, educational counseling, career counseling, you need to also showcase to them that okay, this is what you really want to do, sure, go ahead and do it, but listen to me, these are the options available, this will be in your interest. So at least we need to, you and me, we need to tell them कि भाई तुम जो करना चाहते हो ठीक है, ये करोगे ज़्यादा अच्छा है कि if you do this, Yeah. you'll have better It will prospects. help you out. Yes, obviously, definitely. It will get easy for you to, get the PR, easily. I'll That's say for sure. it We have not. to tell them all the corners, हाँ, हाँ. actually. Yeah. Yeah, yeah, that's about it about postgrad work permit. Mhm. That is it. That was my last question. It was a Okay. wonderful session. You are a hub of knowledge. It's always, I hope it helps out people. And if they yes, have any query, if they have any questions, I'll say they can reach out to any one of us. They can reach out to you. They can reach out to me. We are here to yeah, help, and we'll keep providing them the best options. So stay tuned. definitely. We are going to do a couple of more sessions by end of this year itself, Yes. and we are going Yep. to connect. We are going to bring specialists in the language industry so that they can tell you about the English proficiency exams and all of the stuff. Okay, so stay tuned. Definitely. Take care. For any inquiry on immigration, you can reach out to info@meic.io, or you can reach out to info@rushtocanada.ca. We are available. We'll be ready to provide you assistance. We do give online initial consultations as well. You can book that on our website and we can take it from there. Okay, then take care, That's it. Prableen. Have a Thank wonderful you. week. You too. Take care. Take Bye care. bye. Bye.